Hi everyone. So we are starting, and before that, just make sure that I'm audible and not like everything. Please clear in the comment section, which we would be using for answering all our things. Just drop yes so that I can start with the discussion. All right. Okay. So let us begin with the discussion now. I hope the screen is visible to everyone. See, so the subject matter is environment. Okay, and then April 2023 to December 23. And so far, most of you would be reading the current affairs and everything from different sources. So as of now, let us see कितना आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, ठीक है? And we would be just looking into the things, ठीक है? So today, if possible, just access this comment box, ठीक है? And there would be so many questions today, so please keep on answering in the box as soon as possible. All right, so the very first thing is, for example, like if I talk about the ozone hole. Okay, so ozone hole वाला जो topic है वो थोड़ा सा simple है, so I would suggest you to do your own. Cryosphere, anyone can tell me what do you mean by cryosphere? Cryosphere क्या होता है? What is cryosphere? Just drop your answer. Cryosphere. You can raise your hands if if you want to answer. You can raise your hands. All form of snow covers. Okay, that's good. So cryosphere and permafrost is one of the example we have. Okay, then this ozone layer depletion. So just go through this article. Ozone hole क्या होता है? See, the thing is in today's session, I'm just making you see कि क्या क्या important things है और क्या क्या आपको analyze करना है पढ़ते टाइम, ठीक है? तो we are not concerned कि अभी की studies में क्या आया और क्या नहीं आया. तो rather we are concerned कि सबसे पहले what is ozone hole, then ozone होल जो है उसके डिप्लीशन के सोर्सेज क्या क्या है. तो क्लोरीन, ब्रोमाइन, सीएफसीज, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड देन हेलोन्स, ठीक है? तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको पता होना ही चाहिए. देन वी हैव द पोलर वॉर्टेक्स, देन पीएससी, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जिनको ये नेक्रियस क्लाउड भी बोला जाता है या मदर ऑफ द पर्ल्स, ठीक है? इसके अलावा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर आर ऑफ नो यूज, सो यू कैन skip it. Just consider this statement. Okay, this can be asked in some way, मैपिंग के वे में भी पूछा जा सकता है. तो उस वे में आपको थोड़ा सा याद रखना इसको इम्पोर्टेंट है. ओके, फाइन. उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन. सो वॉल्केनिक इरप्शन से क्या क्या हो सकता है? कोई भी एनीवन कैन टेल मी 2-3 पॉइंट्स ओवर दिस. what are the what are the impact of the volcanic eruption? Anyone? You can raise your hands if you don't want to type, because typing would be taking a lot of the time. Alright, so see volcanic के first of all atmospheric bromine में जो composition है वो बढ़ जाएगा. Then surfaces for the chemical reactions, exactly chemical reactions ज़्यादा होंगे. Then large quantity sulfur dioxide की inject हो जाएगी. Then triggers massive stratospheric water vapor plume. Okay, just remember these things. Then we have the Montreal Protocol. So Montreal Protocol is related to what? Drop your answers. Do fast. Do fast. Montreal Protocol. Montreal ozone. Okay, rest of you, what we are doing in the discussion if we are not answering? Any purpose of joining the discussion if we can't answer simple basic questions? Ozone depleting substances. Good, Api.
ठीक है. सो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, what is the subject for that? And like no, we have decided one more thing, like no, today itself, that those who won't be able to join the next sessions, because from next time we'll try we don't conduct on like no such a public channel or some way. Okay, so if possible try to answer, else we'll see how to do the things from next time. Fine. So see, Montreal Protocol है, then Montreal Protocol का एक और like no एक और component. Anyone can just remember that component? या like no एक Montreal Protocol के बाद में एक और उसी की continuation में एक project और आया था 2016 के अराउंड में. If anyone can tell me, Kigali Agreement. ओके, किगाली एग्रीमेंट, विल सी, अभी वो आएगा आगे. उससे पहले थोड़ा सा और देखते हैं. वियना प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, दैट वाज इंप्लीमेंटेड अंडर व्हाट? वियना कन्वेंशन. ठीक है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी ऑफ यूएन. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, so far we see like no जो yellow highlighted part and that is more important. Rest you can go through it, no issues, but like no we would be just going through the most important things. Then since we know अब थोड़ा सा यूपीएससी ऐसे सिंपल क्वेश्चंस, दो ट्रिवियल बट ऐसे क्वेश्चंस भी पूछने लगा है, लाइक नो कौन सा डेट को सेलिब्रेट होता है. Earlier state PCS were interested, but now UPSC is also interested in such kind of questions. So if you can remember, like no, if you can just give this statement a simple or like no a plain space in your brains, it would be good. ठीक है, तो you have to remember this Kigali Agreement, which I told you 2016 वाला. ठीक है, then India and Montreal Protocol. So like no, how India is a part of Montreal, it is a part or not. So these are the things you have to remember once again. So MOEF-CC. Fine. If anyone of you wants to open your own like no your own PT365 booklet, you can open side by side and you can highlight with me. ठीक है, सो उससे थोड़ा सा आपके लिए प्रोसेस इजी हो जाएगा. नाउ देयर आर टन्स ऑफ रिपोर्ट, like no there are so many ministries, then they would like no release their own reports. We are not concerned about that because इतने सारे reports, इतने सारे institutions है, तो अगर ऐसे याद करने लगे तो हो गया. ठीक है, तो what we would do, जो बहुत ज्यादा important reports हैं, we'll see, हम उन्हें ही पढ़ने वाले हैं. इस रिपोर्ट को if you wish you can remember, but I won't suggest you to like no recall it या याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है इस रिपोर्ट को. ठीक है, उसके बाद में लेट अस मूव अहेड. ये क्रायोस्फीयर का बहुत अच्छा एक इंफोग्राफिक दिया हुआ है, जस्ट टू रिमेंबर, जस्ट टू रिकॉल इफ यू आर समवन हु कांट लाइक नो फिगर इट आउट कि क्रायोस्फीयर होता क्या है. आइस कैप, स्नो, ग्लेशियर, देन लेक, देन सी आइस, आइसबर्ग, आइस शेल्फ, स्नो. मतलब बेसिकली ये जो जितना सा पार्ट है, ये इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो अ मेंस क्वेश्चन. एक बार ये मेंस में आ चुका है. ठीक है, हाउ like no how cryosphere helps to tackle the climate change and how it induces the climate change or like no. So this is somewhere I would suggest important है, hence required to dig it properly. Okay, now cryosphere since we have discussed already, तो आपके फ्रंट में एक बार आप देख सकते हैं. If anyone can tell me what do you mean by albedo? Anyone can tell me what do you mean by albedo? Albedo. Anyone can raise hand or can tell me? Reflection power. Okay. All right. So, for example, if I say like no, oceans. Oceans का albedo ज़्यादा होगा या फिर snow का? Ice reflection index. ठीक है. Correction. Snow. Okay. ठीक है. So I hope आपको पता है. लेट अस सी, अगर इन्होंने कुछ अलग दिया हुआ है जो हमें नहीं पता या हमने नहीं देखा है, देख लेते हैं एक बार. ठीक है, फ्रोजन पार्ट ऑफ द प्लेनेट. ऑलराइट, एंड क्रायोस्फीयर का रोल क्या, जो अभी मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी बताया था. ठीक है, सो बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट समवेयर, हेंस एडवाइजेबल टू गो थ्रू इट वंस एट लीस्ट. ओके, नाउ स्टोर कार्बन. नाउ कैन एनीवन टेल मी लाइक नो ये स्टोर कार्बन जो क्रायोस्फीयर है, दिस स्टोर्स द कार्बन. If I have to say this in one keyword, what keyword I would be using? Aman, I would suggest you to please tag the message, okay, so that no आपका जो message है वो बीच में कहीं भी lost ना हो. And rest of the people, carbon sequestration, Ati, that's fine, but I want to know that term, particular term, जिससे we can denote कि ठीक है इसका मतलब होता है carbon trapping. No.
सी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो फिर कोई भी कर सकता है. इट कैन बी अ फॉरेस्ट, इट कैन बी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और समवेयर. व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट इज क्रायोस्फीयर प्लस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को टोटल मिला के क्या बोला जाएगा. See, like, no, how many times we have discussed, I don't expect ki you are making mistake in this as well. Hydrates, no, 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 no. Hydrate is a different thing. Carbon sink, no. Carbon sink, again, I'm saying कुछ भी हो सकता है carbon sink तो. किस वर्ड से आई वुड डायरेक्टली अंडरस्टैंड कि ठीक है. परमाफ्रोस्ट, नो 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 नो. हाँ, थिंक अ बिट, थोड़ा सा और दिमाग चलाओ. पीवाईक्यू है वो 2019 सीएससी का पीवाईक्यू है. अब तो सोचो क्या हो सकता है. कार्बन फिक्सेशन, नो स्नेहा. गॉड, व्हाट अबाउट ब्लू कार्बन. नहीं है ब्लू कार्बन आंसर. गॉट इट और नॉट. अब इसी बात पे प्लीज बता दो ग्रीन कार्बन क्या होता है जल्दी. ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन का भी डेफिनेशन डाल ही दो एक बार, सिंस पीवाईक्यू है यूपीएससी का 2019 का, सॉरी 2021 का. तो प्लीज शूट दैट एज वेल. Okay, and meanwhile, I'm going through this. So, next article is about ice melt in the West Antarctica. Carbon, green carbon. That's good, Parisma. Okay, so carbon stored in the terrestrial ecosystem exactly is the green carbon. All right, ठीक है. See, अब जितने भी articles है, like no, you can see this talks about the ice melt. Then this talks about the cryosphere. Then this one talks about the Montreal Protocol. Okay, so somewhere we are going in the like no डायरेक्शन ऑफ दिस क्रायोस्फीयर एंड लाइक जितना भी कार्बन एब्सॉर्ब करता है. ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार अंटार्कटिका. अंटार्कटिका की मैपिंग इंपॉर्टेंट है, तो कोई मुझे जल्दी से सीज बता सकता है अंटार्कटिका की मैपिंग में. एनीवन कैन टेल मी सीज. ओके, गुड. रोज सी, फाइन. वेडल सी, करेक्ट. ठीक है, नाइस. ऑलराइट, देन उसके बाद में कुछ और भी जैसे देखो वेडल, वेडल इज देयर. ठीक है, देन वी हैव द साउथ पोल, देन ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट, रोशी, Amundsen Sea, and Thwaites Glacier. अब ये जो Thwaites है, this is highly important. Okay, this is in news since 2021. So this is important. Okay, this is important. David C. Okay, all right. ठीक है, एंड आइस मेल्ट अप सीक्वेंसेस, तो जो कॉन्सिक्वेंस है वो तो सभी सेम ही रहने वाली है. तो आई गेस यू पीपल कैन रीड ऑन. ठीक है, नाउ आई एम कंसर्न्ड अबाउट नेक्स्ट. So anyone can tell me India is a part of Antarctica Treaty? True, false? India is a part of Antarctica Treaty. True, false? Fast. True. Okay, yeah. So Antarctica Treaty and क्या है इसका objective? Objective to demilitarize the Antarctica, promote international scientific cooperation. Then India is a member. Exactly. Then what we have convention on the conservation of Antarctic marine living resources. Ratified? Yes. Okay, ratified? Yes. Then there are some bases. You can go through it. Arctic amplification, what is it? Just explain what do you mean by Arctic amplification. Okay, so Arctic warming more than the terrestrial ecosystems and all. ठीक है, good. अच्छा, उसके बाद में नाइस नाइस परिस्मा, करेक्ट. अब आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन जो है, ठीक है,
that will definitely bring the climate change. We know this, and in like no entire scenario talks about that, so we are not concerned. You people can go through that later on. Now, blue ocean event, anyone can explain what do you mean by blue ocean event? Blue ocean event. सी ब्लू ओशन इवेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्कटिक बिकम्स आइस फ्री, नाइस, गुड, ठीक है। सो ब्लू ओशन इवेंट में बेसिकली आर्कटिक ओशन का जो आइस एरिया है दैट इज ड्रॉपिंग, दैट इज इट, ठीक है। ड्रॉप होने की वजह से क्या हो जाएगा, ड्रॉप अगर उसका आइस लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो व्हाट वुड हैपन, जो रिफ्लेक्शन है यानी कि जो एल्बिडो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एल्बिडो कम हो जाएगा। उसके बाद में कॉप 28, सो कॉप 28 का हुआ था यूएई दुबई, फाइन। देन कॉप कॉन्फ्रेंस है यूएनएफ ट्रिपल सी का, एनडीसी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी 2015 का पीवाईक्यू है, 2015, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट, 2015 का पीवाईक्यू है, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस। देन लॉस एंड डैमेज फंड, पहले लॉस, ठीक है, जो पहले कोई चीज लॉस हुई है फिर वो डैमेज हो चुके हैं, नाउ वी वांट द फंड, ओके, टू रिकंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। देन कम्स द शर्म अल शेख एडेप्टेशन एजेंडा, ओके, and this is also like no, this is called as a Sharm el Sheikh declaration which is for the biodiversity protection, ठीक है। उसके बाद में यू कैन स्किप दिस पार्ट और यू कैन गो थ्रू इट योर ओन, फाइन। अब आते थोड़ा सा यूएनएफसीसी पे, यूएनएफ ट्रिपल सी पे। सो सबसे पहले यूएनएफ ट्रिपल सी जो है दैट फोकसेस अपॉन द ग्लोबल वार्मिंग। देन हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी, देन मेंबर्स, इंडिया इज द मेंबर, एग्जैक्टली, यस, ठीक है, फर्स्ट थिंग। देन इफ यू पीपल रिमेंबर क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो, anyone can tell me what Kyoto talks about? Kyoto Protocol is related to or something? Nice, Ati. Okay, so yeah, Kshitij, correct. GHG, carbon credit, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है, यस, लीगली बाइंडिंग है, 2015 का है। उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अडॉप्टेड, देन जीएचजीज। दिस इज अ पीवाईक्यू अगेन, 2020 और माइट बी 2019, नो 2019 का पीवाईक्यू है, ठीक है। दिस मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, दिस इज द 2019 का पीवाईक्यू, एंड उसमें पूछा क्या गया था बेसिकली, जो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ रिपोर्ट है या इनिशिएटिव है वो किसका है। 4 ऑप्शंस वर यूएनईपी, यूएनडीपी, यूएनएफ ट्रिपल सी और समथिंग, ठीक है। सो आंसर इज यूएनएफ ट्रिपल सी। नाउ मूविंग अहेड, ग्लोबल स्टॉकेट, व्हाट इज ग्लोबल स्टॉकटेक, ठीक है। सो बेसिकली इफ यू पीपल आर लाइक नो एबल टू ब्रिंग द रिजल्ट्स ऑन and towards the Paris Agreement, and this is like no checked once after 5 years, okay। Then Global Green Credit Initiative, see अब ये जो initiatives है, we know there are so many initiatives, okay, and it is really not possible to remember each and every possible initiative। what we would do, जो हमें बहुत ज्यादा important लगते हैं, ठीक है, वो initiative करने थोड़े ज्यादा जरूरी है, जैसे कि ये वाला, this is pretty much important, ठीक है। लाइक नो आई वुड स्टार इट 5 टाइम्स, 5 स्टार जो ये है रिपोर्ट है, ये 5 स्टार डिजर्व करता है, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस, ठीक है, तो बस पेरिस एग्रीमेंट तो समझ आई गया, तो इसको देख के भी आप समझ ही जाएंगे बेसिकली किससे रिलेटेड है। देन दिस वन इज इंपॉर्टेंट सिंस इंडिया ने ही लॉन्च किया, लाइक नो इंडिया इज अ कंसर्न्ड पार्टी फॉर द सेम, hence it becomes important for us to like no have a proper knowledge for this। Then if we talk about the global cooling pledge, okay, India is not a signatory, but ये global cooling के लिए, तो cooling वाला जो like no ये जो initiative है थोड़ा सा अपने आप में यूनिक है, hence we are supposed to go through it।
but you can skip this one or this one. Okay, if you remember, well and good. If you don't, not an issue. Okay, then G7 climate club, India is not a member. Sometimes you have to remember this point also, ki India is a party or not. Why so? Because at the end of the day, UPSC is concerned with India more or less, so we should know India is a part or not. If India is not, it becomes less important, but still subject matter has its own relevance. So if it is the thing, we have to definitely remember those things. Then Altera Fund UAE. Now what is it? It is for the climate change action on. Jitne bhi fund hai, basically, like no, all of them have one job only, and that too, just reconstruct the climate change. So, like no, focus areas are not that important. Just if you even remember the keyword, like the single keyword, it would do the job. But the thing is, like no, announced by and what is it and by whom. That is it. Like no, this is the entire like no entire premises of the subject. Now India at COP 28 again important है, UAE वाला ही है, और यही फंड, ये जो UAE वाला फंड है, ये भी इससे से रिलेटेड है. So hence like no, there is a linkage between both of the things. Hence these things are important. Now this mangrove alliance, अब ये भी थोड़ा सा important है. Okay, anyone can drop 2-3 uses or like no वो पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंस को डिपिक्ट कर सकती है मैंग्रोव की. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव और हाउ मैंग्रोव हेल्प्स इन क्लाइमेट चेंज और समथिंग लाइक दैट. प्लीज ड्रॉप योर पॉइंट्स, और इफ यू वांट टू स्पीक, प्लीज रेज योर हैंड. Okay, carbon sink. Okay, yes, Abdasu, please speak. Ma'am, this mangroves can help us protect nearby populated areas, like reducing erosion or observing storm surge that impacts during the extreme weather events such as hurricanes, like ma'am. Correct. Anything And else? they even keep coastal zones very healthy, ma'am, and provide essential habitat for thousands of species. Exactly. Shoreline protection, nice. Also they like no filter the nutrients. They also helps in the storm surging. And 2004 ka tsunami was also like no, it was also phase jahan pe mangrove played an important role. Multiple uses, bamboo and then food product housing absorbs storm surge. Nice. Okay, all right. ठीक है. Anyone else want to add any point, or shall we move ahead? Yes, speak Anu. Mangroves are also transition exist in the transition zone, so ecotone होता है, therefore we see a species richness. Good point. Correct. Yes, Tanisha. All right. So now let us move ahead. And a call alliance है mango for future. Okay, that is important. I don't think इन्होंने cover किया हुआ है. So it is our job to cover it. Okay, mango for future. So this is important. Prepare yourself. Okay, I have listed it for you. Mango for future. This is important, and then mangrove alliance is in front of us. So mangrove section is entirely important. अच्छे से prepare करो उसे. And mangroves में एक root system होता है. मतलब 2-3 प्रकार के root system होता है. Anyone can just let me know the names. I'm only interested in the names. Need not to define them. Mangroves में there is a root system. Anyone can name them?
Like, no, see, this is Flat easy. New root matter. system, hard root system, and top root system, I think. Yes, yes, correct. New metaphors, chica taproot system, correct. Crop roots, correct. Okay, good. Okay. Let us move ahead now. So now River Cities Alliance. इसमें there is one more alliance that is Lotus. ठीक है, Lotus. So ये जो लोटस वाला है एक इंडिया नीदरलैंड्स का, ठीक है, इंडिया एंड नीदरलैंड्स का एक प्रोग्राम था एंड दैट वाज आल्सो अबाउट दिस लाइक नो रिवर क्लीनिंग एंड ऑल. तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हेंस वी विल प्रिपेयर दिस एज वेल. So this one, then mangroves wala. Rest of the things you can like no skip it. Not as such important, though it can be there. पूछा जा सकता है, but like no, there are so many things. So we'll try कि ये अगर दिमाग में रहता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो it's not an issue. But जो important है वो होना चाहिए, ठीक है. तो लोटस इनिशिएटिव शुड बी देयर. इंडिया नीदरलैंड का एक कंबाइंड एफर्ट है. Okay, now NDC again. I told you PYQ 2015 का, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट 26 वाला है और 28 वाला जो हमने देखा था यूएई वाला, वो दोनों इंपॉर्टेंट है. सो कॉप 26 प्लस कॉप 28, बोथ ऑफ देम आर रेलेवेंट. फाइन. ये एनडीसी का दिया हुआ है, ठीक है. 2015 में ही ये स्टार्ट हुआ था और 2015 के प्रीलिम्स में ही इसको पूछ लिया गया था, ठीक है. एनडीसी जो है उससे पहले नहीं थे, 2015 में आए थे, हेंस 2015 में यूपीएससी ने इसे पूछ लिया था. तो इसलिए दैट टाइम इट वाज रियली रेलेवेंट, दो इट कैन बी आस्क्ड अगेन, बट फॉर नाउ हैव एन आइडिया, दैट इज इट. इट विल सर्व आवर पर्पस. ओके, देन आफ्टर दैट ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, दैट इज इट. रेस्ट वी आर नॉट कंसर्न. व्हाट इज इट? नो, we are concerned ki initiative originated or like no, it was started by or what. After that, Kampala ministerial declaration, this is important. African countries ka Kampala declaration for what? For environment protection, climate change, that is it. Rest you can again eliminate. Okay, then cool coalition. Now if you remember that pledge, cooling pledge, we saw abhi thodi der pehle, cooling pledge. So that and this both are important. Initiative of UNEP. Okay, and cool coalition would definitely talk about the efficient climate friendly cooling for all. For example, refrigerators. ठीक है. Indian International Solar Alliance important है. Anyone can tell me International Solar Alliance के बारे में, इसका headquarter? Where is the headquarter of ISA? International Solar Alliance? Yeah, okay, so Gurugram, Haryana. After that, Nairobi Declaration important है. Okay, annual climate finance pledge of $100 billion and reforms to multilateral financial systems. Addis Ababa Declaration, again important. Marine protection, land degradation, natural capital. C40, yes, important. City of Lakes project, 3I model, Delhi breakthrough initiative in fighting the climate change. Okay, this like no, जहां पे भी ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग लाइक नो, ये भी जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं ये भी WMO के होते हैं. एंड जो ये वाला था अभी वी सो इट हियर, बुलेटिन वाला, या ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ये भी WMO का था. ओके, सो दीज इनिशिएटिव्स आर इंपॉर्टेंट. नाउ okay, so far I guess we have completed 25 pages. Now like no, try to like no revise till here. Okay, page number 19, suppose like no, there are 17-18 pages, so revise things for tomorrow. Like no, yahan tak you can complete
and revise it and just like no put a final stamp key finished. Then from tomorrow we'll start from here onwards.